chapter is Science Chapter 9, Microorganisms Friend and Foe, Environmental Purification. Microorganisms decompose large quantities of dead organisms on land, such as decaying plant and sometimes dead animals, and convert them into simpler substances. Other plants and animals also use these substances. As the result, microorganisms can be used to degrade harmful and foul-smelling substances, thereby purifying the environment. Harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some microorganisms cause diseases in human, plants, and animal. Pathogens are microorganism disease cause diseases. Some microorganisms contaminate food, clothes, and leather articles. Pathogenic microorganisms in humans. Microorganisms that cause disease in human enters our body through breathing, drinking water, and food. The disease can also be transmitted by coming in direct contact with an infected person or animal. Communicable diseases are microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, and physical contact. Cholera, common cold, chickenpox, and tuberculosis are such examples of diseases. To prevent the spread, one must maintain distance from the infected person. Some insects and animals act as the carriers of disease-causing microorganisms. One such carrier is a housefly. Flies sit on garbage and animals' waste. Germs stick on their bodies. Then, when these flies sit on open food, they can transmit germs. Anyone who eats such contaminated food is likely to get sick. As a result, it is the best way to keep food covered. Avoid eating leftover food. Example, female Aedes mosquito is a carrier of dengue virus. तो फीमेल एड्स होती है जो मॉस्किटो है वो किसका कैरियर है? डेंगू वायरस. और जो फीमेल एनलोप्स है, female anopheles mosquito which carry malaria parasite plasmodium is the one of the factor, and all mosquito breed in water, so it can also be avoided anywhere water collect, and such as in cooler, tire, flower vases, etc. should not be allowed to happen. Mosquito can be prevented by breeding by keeping the environment clean and dry. Common disease caused by microorganisms in human disease. Pathogenic microorganisms. Mode of transmission. Some common disease caused by microorganisms in human. Firstly, name of disease: tuberculosis. Pathogen: bacteria. Mode of transmission: air or personal contact. Primitive method: vaccination, isolation of the patient. अब इसका मतलब क्या है कि जो ट्यूबरक्लोसिस एक डिसीज़ का नाम है, उसका मतलब किससे क्रिएट होती है? वो बैक्टीरिया से. और मतलब किससे फैलती है? वो एयर और पर्सनल कॉन्टैक्ट से. और उसका बचाव के लिए कौन सा मेथड है? वैक्सीनेशन या फिर आइसोलेशन ऑफ पेशेंट. अब जैसे फिर कोलेरा है, उसका पैथोजन कौन है? बैक्टीरिया. मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर और फूड. और प्रिमिटिव मेथड क्या कर सकते हैं हम? ईटिंग, मतलब प्रिवेंशन ऑफ ईटिंग एक्सपोज फूड, जो मतलब पैक्ड फूड आता है उसको नहीं खाना चाहिए. ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, जो जितना गर्म पानी पी सकते हैं उतना पिए. पर्सनल हाइजीन और वैक्सीनेशन.
टाइफाइड, टाइफाइड के लिए पैथोजन कौन सा है? बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर। प्रिमिटिव मेथड है गुड सैनिटरी हैबिट्स, प्रिवेंटिंग कंजप्शन ऑफ फूड दैट हैज़ बीन एक्सपोज टू फ्लाइज। मीन्स कि एक्सपोज मीन्स क्या होता है कि जो खुला पड़ा हुआ फूड हो, जो ढका हुआ ना हो और उसके ऊपर जैसे मक्खी मच्छर जो आते रहते हैं, वो ऐसा जो फूड हो वो ना हो, खाए और गर्म पानी पिए। और वैक्सीनेशन मीजले वायरस से होती है, एयर और पर्सनल कॉन्टैक्ट है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और प्रिमिटिव मेथड वैक्सीनेशन, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। हेपेटाइटिस ए ये किससे होती है? पैथोजन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर। और प्रिमिटिव मेथड वैक्सीनेशन और ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। मलेरिया प्रोटोजोआ से होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है इसमें? मॉस्किटो। और प्रिमिटिव मेथड प्रिवेंटिंग द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, यूज द मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स एक्सेट्रा। चिकन पॉक्स वायरस से होती है, एयर और पर्सनल कॉन्टैक्ट। वैक्सीनेशन, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। पोलियो वायरस से होती है, एयर और पर्सनल कॉन्टैक्ट। और वैक्सीनेशन एक सुटेबल एज पे होती है इसकी।